रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं किया था. ओके, समझ में आया? नोट इट डाउन. आगे जाते. -7 volt is the answer. Now let us see the next problem. ये दिख रहा है ना आपको? प्रॉब्लम ठीक से दिखता है? कैन यू रीड दिस? Yes, ma'am. Okay. Now let us solve this next problem. Here again R1, R2 and R3 they are same. So write down the values. RF is 1K. V1 equal to 10 volt. V2 equal to 8 volt. V3 equal to 7 volt. Calculate and tell me the answer. Write the formula. फाइनल आंसर बोलिए. एडिशन कितना हो गया वोल्टेजेस का? 25 वोल्ट, राइट? RF is 1K, R is 10K, so 1/10 आएगा. 1/10 is 0.1. 0.1 multiply by 25 कितना आ गया? -2.5 वोल्ट. आ गया सबको ये आंसर? Let us go ahead if you are not interested. -2.5 is the answer. Next, the two voltages plus 0.6 volt. Now the voltage is taken it as minus 1.4 volt. So V1 equal to 0.6 volt with plus sign. V2 equal to -1.4 volt with minus sign. They are applied to the two inputs, right? And the respective input resistors are, now the diagram is not given. R1 equal to 400 kilo ohm, R2 equal to 100 kilo ohm, and feedback resistor RF is 200 kilo ohm. All the values are different. Okay, so what is our equation? V out equal to minus RF V1 upon R1 plus V2 upon R2. Because values are different, we can write R1 and R2 inside the bracket, right? Substitute all the values and solve it. We will get minus this y plus sign has come because this bracket will give you minus. So minus minus plus ho jayega. Okay, how to solve? You can see here 400 kilo ohm, 100 kilo ohm. So we can write minus 200 kilo in bracket 0.6 divided by 400 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 4 into 10 raised to power 2 and kilo has 10 raised to power 3. So ये हो जाएगा 10 raised to power 5. So 4 into 10 raised to power 5. यहाँ पर माइनस साइन आएगा -1.4. 100 into 10 raised to, so 1 into 10 raised to 2 into 10 raised to 3. I will convert it. So ये भी 10 raised to 5 हो जाएगा. So that 10 raised to power 5 I will take out of the bracket, right? Common ले लिया. So यहाँ -2 into 10 raised to power 5 ये भी हो जाएगा. So ये 10 raised to power 5 और नीचे का 10 raised to power 5 कैंसल. So इसको आपको सॉल्व करना है. 0.6 by 4
Can anybody tell me answer? और -1.4, ठीक है, जो भी आएगा वो इतना आएगा, यहाँ माइनस साइन आएगा, वो माइनस माइनस प्लस होके 2.5 वोल्ट आंसर है। ओके, इस तरह से सॉल्व करना। So that will be the answer. Next is determine the output voltages from the circuit shown in the figure. So एक figure आपको दिया है, this is that figure. Now 3 sets of inputs are given. पहले सेट में +10 वोल्ट इज V1, 0 वोल्ट V2, +10 वोल्ट V3 है। Okay, so we have to change this for 3 different sets, V1, V2, V3. R1, R2, R3 and RF will remain same. Now here again we can see they are different. R1, R2, R3 different, so आपको bracket में लिखना पड़ेगा। Okay. RF is also taken inside to make the simplification easy. Okay. So 1K upon 1K इसको cancel करना है हमें, इसलिए। So what will be the first ratio? 1K 1K 1 हो जाएगा, तो V1 रहेगा only. RF here 1K, R2 2K. So 1/2 रहेगा, किलो ओम cancel. 1/2 is 0.5. तो 0.5 V2 will be there. So simplified equation हमने किया, then we substituted V1, V2, V3 value. Okay. Here kilo kilo cut होके 1/4 will be 0.25. Right. So our equation will be V out equal to minus in bracket V1 plus 0.5 V2 plus 0.25 V3. Now first case, first set of V1, V2, V3 is V1 equal to +10, V2 equal to 0 and V3 equal to +10 volt. Substitute this, यहाँ पे substitute करो, तो V out क्या आएगा पहले केस के लिए? 10 वोल्ट प्लस 0.5 इंटू V2, V2 इज 0, तो दूसरी टर्म तो कैंसिल हो गई। नाउ थर्ड टर्म 0.25 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आएगा? 10 मल्टीप्लाई बाय 0.25, तो 2.5 आएगा, राइट। तो V out will be -12.5 वोल्ट। ओके, सिमिलरली केस 2 के लिए कैलकुलेट करो। 0, ये 0 हो जाएगा, 0.5 इंटू 10 will be 5 volt and 0.25 multiplied by 10 will be 2.5. So case 2 में output equation will be V out equal to 7.5 volt with minus sign. And case 3 में कितना आएगा देखो V out? case 3 की ये वैल्यूज है, all 10 वैल्यूज है, 10 वोल्ट है, तो V1 10 वोल्ट, ये 10, V2 is 10, 10 multiplied by 0.5 will be, yes, 5 volt और ये 2.5. तो एडिशन कितना आएगा? 17 पॉइंट विथ माइनस साइन, माइनस को भूलना नहीं है, -17.5 volt. So every time you are getting different output voltages because your input voltages are different, right? So this way we can solve any problem with the help of same formula. Formula is same. Okay. That's all. सेकंड लेक्चर इसी में है आपका।